So hey everyone, today we are going to perform a practical of physics, B.Sc first year, which is moment of inertia of an irregular body, where object is to determine the moment of inertia of an irregular body about an axis passing through its center of gravity and perpendicular to its plane by dynamical method, which is inertia table. So apparatus which is going to be required for us is inertia table, irregular body, a regular body, vernier calipers, physical balance, weight box, and a stopwatch. So, if I would like to recognize you all the formulas which is required in this experiment, so here it is. To find the reading from vernier calipers is main scale reading plus vernier calipers reading multiplied by least count. Moment of inertia of regular disc can be determined by I2 equals to half mr square, which in unit is kg meter square. Moment of inertia of irregular body is calculated as I1 equals to I2 into T1 का square minus T0 का square upon T2 का square minus T0 का square. Its unit is also in kg meter square. So now, if we will talk about the procedure, तो यहाँ procedure दिया हुआ है पहला नंबर. Make the heavy iron base of the inertia table horizontal. If required, use the leveling screws to make the box horizontal for inertia table. Second है, now place the balancing weight if the concentric groove of the circular table if required. So these are some practical things. So let's get straight to our video, जिससे कि मैं आपको इन सभी चीज़ों के बारे में बता सकूँ, सारे apparatus को recognize करा सकूँ. So here we are. So here we are going to perform a practical of moment of inertia of an irregular body. This is known as inertia table. So we are going to perform this, and there are some apparatus which I am going to show you. So these are physical balance which is used to balance our inertia table like this. And also there we have some irregular body which are in different shapes. There are different types of irregular bodies, and this is our regular body, which is a disc of 500 gram. You can see here. हम लोगों को इनमें से किसी भी एक इरेगुलर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. हम इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं, जिससे कि हम लास्ट में इरेगुलर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकें. वी कैन टेक दिस सिलेंड्रिकल शेप और दिस क्यूब वन, और वी कैन ऑल्सो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्फीयर. और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि ये बेसलेस स्फीयर ये मूव नहीं कर रहा है. दैट मीन्स कि हमारा जो इनर्शिया टेबल है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है एट 0 डिग्री. सो यू कैन चेक योर इनर्शिया टेबल बाय दिस ऑल्सो. सो नाउ एज यू कैन सी दिस इज आवर रीडिंग टेबल ऑन विच वी हैव टू फर्स्टली नोट द सीरियल नंबर, जिसमें हमें 5 बार इस ऑक्सीलेशन को परफॉर्म करना है सबके लिए. फर्स्ट टाइम हम लोग करेंगे इनर्शिया टेबल एलोन, जिसमें कि हम कोई भी वेट अप्लाई नहीं करेंगे. ऑन दैट कंडीशन द टाइम which comes in minute, we just have to wrote down here from our stopwatch, and the seconds in it we just wrote down here, and the total time, जिसमें कि हम इन दोनों को सेकंड में कन्वर्ट करके यहाँ लिखेंगे सभी के लिए. ये है हमारे नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस, जिसमें हम पहली बार 10 ऑक्सीलेशंस के लिए करेंगे, फिर दूसरी बार 15 ऑक्सीलेशंस के लिए. उसी तरीके से ये सारे परफॉर्म करने हैं. उसके बाद जब हम यहाँ टोटल टाइम लिख लेंगे तो हमें निकालना पड़ेगा टाइम पीरियड, इन विच वी हैव टू डिवाइड दिस टोटल टाइम बाई द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस फॉर ईच. ये सारे ही निकालने के बाद हमें यहाँ मीन टाइम निकालना पड़ेगा. इन सभी को ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे. सो वी जस्ट हैव टू डू द सेम प्रोसीजर हियर, फ्रॉम वेयर वी हैव टू ऐड इरेगुलर बॉडी ऑन इनर्शिया टेबल. फिर उसके बाद हम इसके सारे रीडिंग्स निकाल लेंगे. आफ्टर दैट वी जस्ट हैव टू ऐड दैट रेगुलर बॉडी ऑन इनर्शिया टेबल. हमें उस रेगुलर बॉडी यानी कि ये डिस्क जो है इसे रख के हमें अपना पूरा ऑक्सीलेशंस काउंट करने हैं, टाइम निकालना है. After then doing that same procedure, we just have to find out the mean of T2, T1 and T0. After that, we just have to come back on our procedure page again, जिसमें हमें number 3 को perform करना है, which is now twist the table slightly in a horizontal plane and then release it in such a way that it oscillate without moving as a whole. मतलब वो पूरी body vibrate या बहुत ज़्यादा move नहीं करनी चाहिए. The table should execute torsional oscillation only. The table should execute torsional oscillation only. वो सिर्फ torsional execute करनी चाहिए. So let us see how it works. So now we have took a stopwatch for calculating the time for our oscillation. So let's start our oscillation with a twist. So here we go.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So as you can see this, the time is 1 minute and 10 seconds for 10 oscillations. तो इसी तरीके से हमें 10 के बाद 15 ऑक्सीलेशंस के लिए, फिर उसके बाद 20 ऑक्सीलेशंस के लिए, फिर 25, फिर 30, ऐसे ही इन पाँचों के हमें ऑक्सीलेशंस निकालने हैं। मैं इन सब के रीडिंग्स आपको अपने रीडिंग नोट पे शो करता हूँ। सो जैसा कि आप सभी ने देखा, यहाँ हमने 10 ऑक्सीलेशंस पे इनर्शिया टेबल अलोन का किया है, जिसमें हमारा कैलकुलेशन आया है 1 मिनट एंड 10 seconds, which is approx 70 seconds. This is known as 60 seconds and plus 10, which is 70 seconds. So अगर हम लोग इसे टाइम पीरियड के फॉर्म में निकालें a by n, so here is a and this is n, 70 by 10, which is 7 seconds. तो हम इन सभी का निकाल के आपको सीधे रिजल्ट दिखाते हैं, देन वी मूव टू आवर सेकेंड पार्ट. सो एज आई सेड, हमने सारे का ही निकाल लिया है. ऑलमोस्ट एलोन टेबल में सारे का हमने टाइम पीरियड निकाल लिया है. एंड द मीन टाइम इज टी नॉट, विच इज 6.61 seconds. So now just move on our second part, which is inertia table plus irregular body. So let's get straight to the video. So now place the irregular body centrally on the inertia table and repeat the above procedure from step 3 and step 4 to find out the mean value of time period t1. जैसा कि हमने procedure 3 and procedure 4 में किया है, we just have to repeat that process once again. So let's do it. So here now we have just took a irregular body which is cylindrical in shape. तो हमें irregular body को एकदम सेंटर में रख के inertia table को ट्विस्ट करना है. फिर और experiment will gonna be start. Here we go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So here you can see the reading is 1 minute and 9 seconds. So let's note it first. So जैसा कि अभी हमने देखा, हमारी रीडिंग आई है मिनट के लिए 1 minute and 09 seconds. So this can be written as 969 seconds. So by time period we can just say that this is 6.9 seconds. तो मैं इसी के आगे का सारे ऑक्सीलेशंस के लिए आपको निकाल के दिखाता हूँ. So as you all can see, I have filled it up. Now my mean time t1 is 6.95 seconds. So let's move on our another part, which is inertia table plus regular body, where regular body is the disk. So let's move on. So before going on our video, now remove the irregular body and put the regular body, which is disk, on the inertia table centrally. Again, find the time period t2 by repeating the above procedure. So now is the time to put the disk on the inertia table. Here the weight of disk is 500 gram, which is regular disk. Put this disk on the center of inertia table and repeat the process we have did last 2 times. So here we go. 1,
4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So here you can see the reading is 1 minute and 21 seconds. So we just have to write in our note. Now as you saw, the reading of inertia table plus irregular body is 1 minute and 21 seconds, which is almost 81 seconds, and the T2 will be 8.1 seconds. So now as you can see this, मैंने सारे ही number of oscillations पे time period निकाल लिए हैं, and their mean also are determined here. So let's move on our next step. So here is our last procedure of this experiment, in which we have to measure the diameter of the regular disc with the help of vernier calipers at more than one place and determine the mean value of radius r, and also find the weight of regular body disc and note its mass m. Let's see how to do this. After finding the readings of this irregular body and this regular body, you just have to find out the mass of this regular body if it isn't mentioned on it. Then after that we just have to go on another segment, which is using a vernier caliper. So how to use a vernier caliper for this experiment? You just have to use it like this and take a closure measure of this. After having a grip, you just have to tightly hold the vernier caliper around the disc and then take a closer look of this vernier caliper scale. You just have to find this using the formula which I have told you in the starting of this video. After that, you have to use this vernier caliper perpendicular to the way you have used it before. So this is my perpendicular measuring. I'll show you the pics of that in this video. So here this is the readings of both. So as you can see, we have found the reading from vernier calipers according to our formula, which was main scale reading plus vernier scale reading multiplied by least count. So here is the main scale reading is 7.4 centimeters, vernier scale reading was 9 centimeter, and as we know, least count is 0.01 centimeter. On putting this all and solving this, we just got the diameter of 7.49 centimeters. Using this, we just have to calculate our reading table for radius of the given disc. So by using that, we just make an table for measurement of radius of the given disc. So in this, we just have created two slots of measuring, in which firstly is in any direction and the second one is in its perpendicular. So here it is a measuring scale units, and it is vernier scale unit, and it is the total unit, which was calculated by me just a few minutes ago. So उसी फार्मूले से हम लोग पहले ये निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग ये सेकंड वाले के लिए भी सेम फार्मूला लगा के ये निकाल लेंगे. इसके टोटल निकालने के बाद हम लोग इसके डायमीटर के लिए x प्लस वाई, जो कि y हेयर इज x प्लस वाई बाई 2 करेंगे, जिससे हमें इसका एक मीन निकल जाए. उसके बाद इन सब का मीन निकालेंगे, जिससे हमें एक्यूरेट डायमीटर मिल जाए. आफ्टर दैट वी जस्ट फाइंड आउट द रेडियस बाई d बाई 2. Here is our radius. And now when we come over on our calculation, mass of the solid regular disc is m equals to 500 gram, as I have shown you, जिसे हम लोग 0.5 kg भी कह सकते हैं. और radius of the regular disc is 3.74 centimeter, जिसे हम लोग 3.74 into 10 के पावर माइनस 2 मीटर या फिर 0.0374 मीटर भी कहते हैं. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमने फार्मूला एकदम स्टार्टिंग में देखा था, उसी में सारी वैल्यूज पुट करने के बाद we just got that the I2, which is of regular disc, is 0.000349 kg meter square. So now we have to find out the moment of inertia of irregular body, which was our aim. So I1 equals to I2 into T1 का square minus T0 का square, T2 का square minus T0 का square. So on putting the all values in it, we just got that this is our final result. So
the moment of inertia of the irregular body about the axis of rotation is 0.000784 kg meter square. This is our final result. So there are some precautions on which we have to put some focus. So let's read it. The base and inertia table must be horizontal for the all observations. सभी ऑब्जर्वेशंस के लिए जो हमारा बेस है और जो इनर्शिया टेबल है वो दोनों ही हॉरिजॉन्टल होना चाहिए. टेबल शुड बी ट्विस्टेड हॉरिजॉन्टली एंड थ्रू अ स्मॉल एंगल ओनली. हमें इसे हॉरिजॉन्टली और एकदम स्मॉल एंगल पे ही इसे ट्विस्ट कराना है. एंड थर्ड प्रिकॉशन इज देयर शुड बी नो एनी अप एंड डाउन एज वेल एज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द टेबल. इसमें हमें अप या डाउन या टू और फ्रो मोशन नहीं करना है जैसे हम लोग बार पेंडुलम में करते हैं. सो ऑन फोर्थ, वायर शुड बी फ्री फ्रॉम किंग्स. वहाँ कोई नॉट्स नहीं होने चाहिए. दिस शुड बी फ्री. सो ऑन आवर फिफ्थ हैंड, time of oscillation should be noted very carefully. So if you find this video helpful, let me know by leaving a comment and a thumbs up.